Good morning, students. Today we will solve exercise 8B, page number 107. So, in this exercise, we will solve addition and subtraction of mixed numbers. So, there are mixed fractions will be there, and we will solve it. So, we know that we can, very well how to convert improper to mix and mix to improper, means how you can change it. So that based on this we will solve some question. So here the first question, we have to add 3 1 by 2 plus 4 and 1 by 2. So we have to add it. So let's solve first question number 1. So that is 3 1 by 2 plus 4 1 by 2. So first of all, it is in the mixed fraction. So what we will do, first of all we will change to the improper. So what is the rule? These two we will multiply 3 into 2. So 3 into 2 6, and this one I will add. So first these two we will multiply 3 2 ja 6. So 3 2 ja 6 plus this one, so that is total 7. So 7, and this 2 I will write the same here 2. Now plus same we will do here for also 4 into 2, 4 2 ja 8, 8, and this one will add. So 4 2 ja 8, 8 plus 1 9. So you can write here 9, and this denominator part will be same 2. Okay, now we can add it. Yes, and we know that if the denominator part is different, आपको पता है कि अगर denominator part अगर different होता, अलग अलग नंबर होता, तो हमें LCM निकाल के उसको सेम करना पड़ता, उसके बाद फिर हम लोग ऐड कर पाते. बट यहाँ पर ऑलरेडी ये सेम है, ऑलरेडी 2 2 है, दोनों में सेम है. सो वी कैन इजिली वी कैन ऐड. सो व्हाट यू कैन डू, द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट this I will write only 1 2, and in there is 7 and 9. So you can see in the numerator part there is 7 and 9. So 7 plus 9. So 7 plus 9, 7 plus 9, it will be 16. 7 plus 9 16, and 2, this 2, and also we can divide it how many times, 8 times. So finally what is the answer? So we got the answer 8. Okay, so this is our answer. So what we have done, simply this mixed fraction we have, so mixed 2 we have changed to the improper, and then after we can add. So first of all we will see this denominator part, they are same or not. If they are not same, we will take the LCM and we will make the same, then after we will add. So it is here already it is same, so no need to take the LCM, simply directly we can add. Okay, now next question, here I will do next question, question number 4. Okay, question number 4, 105 7 by 15 plus 220 2 by 15. Okay, so here question number 4, 105 7 by 15 plus 220 2 by 15. So here what you have to see, आपको यहाँ पे एक ध्यान देना है, अगर नंबर बड़ा हो, मीन्स आप देख रहे हो होल पार्ट कितना 105 है, यहाँ पे 220 है, आप इसको दो मेथड से बना सकते हो. क्या दो मेथड है? पहला मेथड तो आपको पता है, आप इसको मिक्स को सिंपल कर लो, मीन्स इसको 105 और 15 को मल्टीप्लाई एंड 7 को ऐड करके आप मिक्स से उसको आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बना लो, फिर आप उसको ऐड कर लो. एक प्रोसेस, एक मेथड ये है. ठीक है. दूसरा मेथड क्या है, हम लोग इसको सेपरेट करके लिख देंगे, थोड़ा सा अलग अलग करके लिखेंगे. कैसे? आई विल सॉल्व इट दिस क्वेश्चन बाय द मेथड नंबर 2. क्योंकि जब आपका होल नंबर पार्ट बड़ा नंबर हो ना, तो ये वाला जो अभी मैं मेथड जिसे मैं बना रहा हूँ, दिट विल बी वेरी इजी. इसमें क्या करना है आपको, आप उस वाले मेथड से भी बना सकते हो. इसको 105 और 15 को मल्टीप्लाई करा दो प्लस 7 मीन्स मिक्स से आप इम्प्रॉपर बना लो, फिर आप उसको ऐड कर सकते हो. बट ये मेथड 2 में क्या है, अगर होल पार्ट का जो नंबर है, जो डिजिट है वो बड़ा हो, तो आप कैसे इसको कर सकते हैं? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 105 आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स. एक उसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है. तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे. तो इसमें होल पार्ट क्या है 105, सो प्लस, ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया भी था पहले, आप पहले के वीडियो देख सकते हो, 105
अभी इस 7/15 को आप अलग लिख लो, 7/15, ओके। नाउ प्लस 220 को भी अलग कर दो इससे, प्लस, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे कुछ, here इज व्हाट, here इज प्लस साइन, सो प्लस। नाउ अभी क्या इधर है 2/15, ठीक है। अभी हमने क्या किया, होल पार्ट को अलग और फ्रैक्शन पार्ट को अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया। अभी क्या है, सारा जितना भी इसमें जितना आपका होल पार्ट्स है उसको एक साथ लिख दो। अभी क्या क्या होल पार्ट्स है, 105 प्लस 220 एक होल पार्ट्स था, दो होल पार्ट था ना ये दोनों, और मिक्स वाला सॉरी जो फ्रैक्शन है उसको एक साथ आप लिख दो। मिक्स को फ्रैक्शन में कौन कौन है, 7, 15 एंड 2/15। सो अभी आप इसको लिख दो एक साथ, 7/15 प्लस 2/15। नाउ नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन इजिली ऐड इट, यू कैन ऐड इट। सो अभी आप इस दोनों को ऐड कर सकते हो, 105 प्लस 220, आप इस दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 325, ठीक है। अभी इधर में आपको कितना बच गया, 7/15 प्लस 2/15। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू, अभी आप देखो इसका भी डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, आप इजीली इस दोनों को ऐड कर सकते हो। यस, कोई आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट दिस 325 प्लस, अभी इस दोनों के बदले आप 15 लिख दो यहाँ पे, और न्यूमरेटर पार्ट में कितना था, 7 and 2, सो दैट्स यू राइट 7 + 2। सो नाउ नेक्स्ट यू कैन राइट 325 प्लस 7 + 2, here is 7 + 2 9, so you can write 9/15, ठीक है। नाउ आल्सो यू कैन मेक इट सिंपल आल्सो, here you can divide it here, 3 3s are 9, 3 5s are 15, so now next will be 325 प्लस here is 3/5, डिवाइड करने के बाद आफ्टर सिंपलिंग यू गॉट 3/5, सो दैट्स अ 3/5। नाउ अभी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट आल्सो 325 एंड 3/5, सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट। आप अभी हमने कैसे बनाया, जितना भी होल पार्ट्स था उसको अलग लिखा और फ्रैक्शन पार्ट को अलग लिखा, फिर उसको ऐड कर दिया, दिस इज़ द वन मेथड। या फिर आप इसको यहाँ पर आप दिस मिक्स को आप इम्प्रॉपर बना के फिर एलसीएम निकाल के, या फिर अगर सेम है डिनोमिनेटर तो बिना एलसीएम के भी आप आगे ऐड करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। बट दिस इज ईजी व्हेन योर होल पार्ट, दिस होल पार्ट इज बिगर नंबर, okay, so this is very useful method, okay, so you can do like this। got it, how we have done, okay, hope you understand, okay, you can see, okay। Now next question we will solve, here next question we have, yeah, next question you can see here, number 6 I will do, 12 plus 12 7/8 plus 12 17/18, okay, so this question we will do, let's solve question number 6, okay, 12 plus 12 7/8, sorry 18 plus 12 17/18, here also what I will do, I will solve it by the, I will write the separate whole part and fraction part, I can solve it, you can solve it by also, you can make it improper, means this you can change this mix to improper and then you can solve, that's the one method, and one more method, just now I told that you can write the separately whole part and fraction part, so I will solve it by the writing the whole part separate, so here is 12, here is 12 plus 7/18 plus 12 plus 17/18, got it। Now I will add the whole part, all the whole parts, you can see here is 12 12 and here is 12, so 3 times 12 whole parts are there, so 12 plus 12 plus 12 you will get 36, okay। Now here is remaining 17/18 plus and 17/18, okay। Now these two fraction we can add also, this two fraction, and also you can see it's a
denominator part is same, so easily we can add. So 36 you can write here, and for this two fraction you can write 7 plus 17. Now next 36 plus 7 plus 17, it is your 24 by 18. Also you can divide it. So 6 times 6 4s are 24, 6 3s are 18, so 4 by 3. So next you can write 36 plus 4 by 3. Now also one more thing, you can see this 4 by 3, it is your 4 by 3 is what, improper fraction. What you can do, दिस 4 by 3, अभी 4 by 3 क्या है आपका, इम्प्रॉपर है. आपको पता है ना प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता है जब न्यूमरेटर पार्ट छोटा हो डिनोमिनेटर वाले से. अगर न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है डिनोमिनेटर पार्ट से, वो क्या है, इम्प्रॉपर है. सो 4 by 3 क्या है आपका, इम्प्रॉपर है. सो फर्स्ट ऑफ यू डिवाइड बाई 3 वन टाइम 3, सो यू कैन राइट दिस 1 1 by 3. सो दिस 4 by 3 आल्सो यू कैन राइट, क्योंकि ये 4 by 3 क्या है आपका, इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर से आप मिक्स बना सकते हो. सो यू कैन राइट इस, अभी इस 4 by 3 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हमारा क्या मिला है 1 1 by 3. सो दैट आई कैन राइट हियर 1 and 1 by 3. अभी आप देखो ना, इसको अभी फिर से हम लोग लिख सकते हैं. इस वाले पार्ट को आप चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें अभी होल पार्ट है और मिक्स पार्ट, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट है. दैट यू कैन राइट 1 1 plus 1 by 3. Now you can add again 36 plus 1 37. So you can write here 37 plus 1 by 3. So it is this one, you can write 37 1 by 3. Okay, so you can see how we have solved. So here is what, this whole part I have added first, and then fraction part. After adding, we have seen that this result 4 by 3 is already in improper. What is improper? Whose denominator part, whose numerator part is greater than the denominator part. So that is your improper. So if this improper we have changed to the mix. In the mix we know that it is mix is the mix consists two part, means one is whole and one is fraction. So this whole part is there 1 and 1 by 3. This whole part 1, it will be added to 36, so 37, and this 1 by 3 is as it is, and now 37 and 1 by 3 is the answer. Okay, now we will solve question number 8. 5 3 by 4 plus 3 and 5 by 6. Okay, let's solve question number 8. So question number 8, 5 3 by 4 plus 3 5 by 6. So in this question also, this question, ये वाला क्वेश्चन आप होल पार्ट को अलग लिख सकते हो, और जो भी आपका फ्रैक्शन पार्ट है उसको आप अलग लिख करके फिर आप उसको ऐड कर सकते हो. ठीक है, मीन्स आप उसको फिर से, अगर फ्रैक्शन इक्वल्स नहीं है उसके डिनोमिनेटर्स, तो आप उसको एलसीएम निकाल के आप कर सकते हो. या आपको दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, आप इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर बना लो. तो हम अभी इसको मेथड 2 से बनाएंगे. सो 5 4 जा 20 प्लस 3 23. सो यू कैन राइट हियर 23 प्लस 6 3 3 into 6 18 18 plus 5. This 5 you can add, so you will get 23 by 6. Okay, now 3 and 6 you can see here, you can see this 3 and 6, they are not equal. Okay, so sorry, here will be 4 actually. Okay, now you can see here this 4 and 6 are not equal, their denominators are not equal. So what we will do, we will take the LCM. So we will take the LCM of 4 and 6. So you can find the LCM. 2 2 is 4, 2 3 is 6. So 2 into 2 into 3. So you will get here 12. So what is the LCM? 12. Now I will make this same. So I can write this 23 by 4. So this 23 by 4 you can write. So 4 by 4 you can divide 12. What is, how many times you can divide 12? 3 times.
So 23 into 3 you will get 69 by 12. So this is one fraction. Next is your 23 by 6. Okay, next is your 23 by 6. So now you can divide this 23 by 6. You can divide, what is the LCM? 12. So that 12 you can divide by 6 how many times? 2 times. So you will get 46 by 12. So now we have the two fraction, 69 by 12 and 46 by 12, and you can see their denominators are same, so easily we can add. So now these two we can add easily. So now we will write here our next step. So that is 69 by 12 plus 46 by 12. Now we can add. Now you can see denominators are same, so easily we can write. Only 12 we will write. Now in the numerator part 69 plus 46. Now you can add 69 plus 46, so you will get 115 by 12. Got it? Now you can make this 115 by 12 is in the improper fraction, so we will make it mix. So 115 you can divide by 12 how many times? 9 times 108, so there will be 7. So this 9 we will write the first, so you can write 9. What is the remainder? 7, so write here 7, and this 12 I will write here same. So 9 7 by 12, so that is your answer. Got it? So in this question, here which method we have followed? Here what we have done, we have changed mixed fraction to improper. Here we have changed mixed to improper. Then after we see that their denominators are not same, so that's why we find the LCM and make their denominators equals, and then after we can add it. Okay, so that's the answer. Now next question we will do question number 11. 4 1 by 3 plus 2 and 1 by 6. Okay, now let's solve this question number 11. 4 1 by 3 plus 2 1 by 6. So first of all we will make it, I will solve this, I will make it improper. 4 3 is 16 plus 1, sorry, 4 3 is 12 plus 1 13, so 13 by 3 plus 2 6 is 12 plus 1 13 by 6. Okay, now I will take the LCM of 3 and 6, 3 and 6, so LCM 3 1 is 2, so 3 into 2. So what is the LCM? 6. What is the LCM? 6. Now I will make the same first of all. So this 13 by 3 equals to 13 by 3. So how many times 6 you will get? Means LCM is 6. So if you divide by 3 to 6, so how many times? 2 times. So 13 2 is 26 by 6. So this is our first fraction. Now next is that 13 by 6. So this 13 by 6, so it is one time only, so 13 by 6. So two fraction we have, 26 by 6 and 13 by 6. Now we can add it easily, that is 26 by 6 plus 13 by 6. Now you can see their denominators are same. Now we can add, so right here 6, 26 plus 13. So 26 plus 13 you will get 39 by 6. Also you can divide it. So 3 3 ja, 3 2 ja 6, and it will be 13. 13 3 ja 39. So what is the final answer? 13 by 3. So this 13 by 3 is again in improper, so you can make it mix. So 13 divided 3, so how many times? 4 times 12, so here will be 1. So you can write this 4 is there, 1 and 3. So 4, sorry, yeah, so this is your answer. Okay, you can see here here is actually, here we have done mistake. Here will be 2. Okay, 3 2 ja 6, and that is 3, and here will be also 2.
here will be 2, here will be 13 divided 2. So now here we will divide by 2, so it will be divided by 2. So how many times? 6 times. So it will be divided here 6 times, so 12. So now fraction will change, so it will be 6 and 1 by 3. Okay, so the answer is 6 1 by 3. Got it? Okay. Now here next question we will solve. Question number 15. 4 by 5 plus 5 and 1 by 8. So let's solve question number 15. Question number 15. So what is this? 4 by 5 plus 5 1 by 8. So first of all we will make it to the improper. 5 4 is 20 plus 4. So you will get 24 by 5. Same here. 5 8 is 40 plus 1, 41 by 8. Now we will take the LCM of 5 and 8. We will find the LCM of 5 and 8. So it will be 40. We will not able to divide by any number. So it will be 40. Now we will find the fraction, and we can see their denominators are not same. So that's why we will change to the this 24 by 5. So 24 by 5. So how many what is the LCM? 40. So how many times we will divide by 5? 8 times. So 24 into 8, so we will get 192 by 40. Okay, now second one 41 by 8. So 41 by 8, so you can write 41 by 8. So how many times? 5 times you can divide. So right here 5. So you can get 205 by 40. So now two fraction we have now, 192 40, and you can see their denominators are same. So now we can add it easily. So here is 192 by 40 plus 205 divided by 40. You can add it, these two. So you can write here 40, and here is 192 plus 205. So 192 plus 205, you will get 397 divided by 40. Okay, now you can change it also, means it is your mixed fraction. So you can, sorry, this is your improper, you can make it to the mix. So 397 divided by 40. So how many times? 9 times you can divide 360. So 7 and 3, 37. So you can write here 9. So 937 by 40. You know how to write this? This quotient part, you write the first. This is the quotient part. Okay. So quotient part, and this is your remainder, and this is your denominators. Okay. So 9 and 37 divided 40. Okay. So this is your answer.